Happy Gurupurab to everyone first. Thank you. पहले let's revise with a small test what was covered in last class. ठीक है, कुछ आता है जान, हो चुका है गोल, ठीक है. After that we will start. Copy दो. कॉपीज बंद कर लो अपनी. घर पे नहीं पढ़ा तो 2 मिनट में क्या पढ़ा जाएगा, एक हफ्ते में नहीं जो पढ़ा गया. ये पंचवर्षीय योजना बनाने में बहुत काम आती है यूपीएससी का. हाँ जी, आपसे स्टार्ट करते हैं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, इसके बारे में 5 पॉइंट बताओ कोई भी. थोड़ा जोर से बोलो. अरे कान में छेद है, नहीं सुनाई देता, जोर से बोलो. हाँ पॉइंट ही तो बोला हूं मैंने, पॉइंट ही बोला है. गलत. प्रधानमंत्री आवास योजना. फाइन. वेरी सिंपल. निरांचल वाटरशेड प्रोजेक्ट. निरांचल वाटरशेड प्रोजेक्ट. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. Priyanka, where are the tribe Todas found in the country? Todas. Very good. Question: where are Uralis found? URALLIS. सही है. Where are Santals found? Where are Mundas found? अरे नहीं, जिससे पूछा जा रहा है. नितेश पीछे. Where are Birhots found? Irulas, IRULAS. Same question. Sandhya, Bandhani is a geographical indicator of which state? Bandhani. And Shushan. IKAT. Geographical indicator कहाँ है? हाँ.
What is Huntington's disease? What are the 5 types of silk that are found in the country? Military exercise, Yuddha Vyas is between? Ajaya warrior is between? Indo? Lavanya, equivalent is between? Equivalent, EKUVERIN. और कोई? हाँ जी अमित. Corpus is between? Corpus, CORPAT. Salman Singh. Salman. Sahyog is between? Sahyog. India and? Sukhvinder. What is Annapurna scheme? Singh sir, what is Neelanchal watershed project? अरे रुक जा, तेरे से ही पूछूंगा, क्यों घबरा रहा है? दो बताओ फिर. प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 पॉइंट. आवाज योजना 5 पॉइंट्स. एक से वो इंदिरा आवास योजना का पार्ट था पहले, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना वो PPL और जो SCCC 11 वहाँ से जो PPL कैटेगरी के लोग हैं वहाँ उनके लिए प्रोवाइड करेगा हाउस. लेकिन 1.5 लाख एक ही चीज चाहिए. 1.5 लाख. वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट. ठीक, अब देना. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना. एक बार रिवाइज करो जो कराया था, उसके बाद स्टार्ट हो गया. जल्दी से करो थोड़ा सा. अरे आधा घंटा हमारे लिए भी निकाल लिया करो घर में पढ़ने के लिए. व्हाट वी आर टीचिंग काफी हेल्पफुल रहेगा.
आप बताओ। नहीं नहीं नो प्रॉब्लम, मैं तीनों देख के बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। I'll check it and then यूएस, हाँ यूएस पहले था जब, हाँ वो इंक्लूड हुआ, यूएस भी इंक्लूड कर दिया। नहीं नहीं तीनों के साथ है। Next is Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The scheme is National Apprenticeship Promotion Scheme. Skill Development and Entrepreneurship. The scheme has been launched in a way that it would be covering approximately 50 lakh youth which would be covered, and these 50 lakh youth would be provided training so that they would be in a position to create more jobs. आप एक कुछ लोगों को train करोगे, they would be opening up of their own firm or any other small industry or something else, and then they would be providing. But it becomes important that these people have the required skill. So therefore, the aim is to train 50 lakh people by 2019-20. उनको train करना है. In the training, both the center and the state would be contributing. For example, the union government would be giving 25% of the stipend. For example, if there is any student who is coming from southern part of the country, or for example northeast part of the country, या बहुत सारी governments है which give various scholarships to the student even to prepare for UPSC. UPSC के लिए भी scholarship मिलती है, तो पढ़ने के लिए scholarship is one thing. On the other hand, they also give stipend कि वहाँ पे दिल्ली में आप जब जा रहे हो पढ़ने के लिए and you are coming from a poor family, you need to have food and other stay also. तो उसका स्टाइपेंड का 25% शेयर वुड बी बाय द यूनियन गवर्नमेंट. नॉट ओनली दिस बट 50% ऑफ द ट्रेनिंग एक्सपेंडिचर वुड आल्सो बी शेयर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. तो रिमेनिंग 75 और 50 हो गया, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का हो गया. एंड द यूनियन गवर्नमेंट विल आल्सो गिव द सपोर्ट, एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू हैव अप to fulfill the aims and objectives of skill development and entrepreneurship policy that has been started by the government in 2015. 50 लाख लोगों को ट्रेन करना है. कब तक ट्रेन करना है? 2019 और 20 तक. क्यों करना है? अपने एम्प्लॉयमेंट और आगे मोर एंड मोर जॉब्स क्रिएट कर सके. ट्रेन करना, पैसे लगेंगे, पैसे में से यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेंगे. 25% स्टाइपेंड आपको वहां पे रहने का खर्चा यूनियन गवर्नमेंट करेगा शेयर, और 50% जितना ट्रेनिंग पे खर्चा आएगा वो शेयर करेगा. कोई प्रॉब्लम? लिखो जी. To provide apprenticeship training to over 50 lakh youngsters, to provide apprenticeship training to 50 lakh youngsters by 2019-20, 2019-20.
in order to create more jobs. In order to create more jobs. Second point, it is implemented by Director General of Training, DGT. It is implemented by Director General of Training. Third point, the union government will share 25% of the total stipend. 25% of the total stipend payable to apprentice with employers. With employers. Employer जो employ कर रहा है उनको. Next point, the union government will also support basic training. The union government will also support basic training and will bear 50% of the total expenditure and will bear 50% of the total expenditure incurred on providing basic training to an apprentice. Basic training to an apprentice. Next, the scheme has been framed. The scheme has been framed with the objective of national policy. Framed to meet the objective of scheme has been framed to meet the objective of national policy of skill development and entrepreneurship 2015. The scheme has been framed to meet the objective of national policy of skill development and entrepreneurship 2015. Next, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. Anyone क्या है ये? स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ. और क्या होगा? ठीक है, कितने यूथ को करना है? और कुछ? सिर्फ यूथ को ही ट्रेन करना है या किसी और लोगों को भी? और कुछ? ठीक है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. It is a scheme which started in 2014 with the objective that it would 2015 with the objective that it would be covering 24 lakh youth in the country. कैसे? By providing them skill training. And the training has to be of an international standard, so that we can be in a position to meet the standards at the international level. अगर international standards को meet करना है, we need a better trained instructors also. Therefore, the policy focuses not only on skilling the youth, but also skilling the youth in a way that we have even better instructors. क्यों? So that we can be in a position to provide skill training of the international standard. Now, third point. Then the monetary award will be given 8,000. अब क्या आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट विल डिपेंड अपॉन द असेसमेंट दैट वुड बी डन बाय अ थर्ड पार्टी. आपको तो ऐसा करो, चलो कहीं से इंटरनेशनल लेवल भी तो डिफर करता है. आप बोलो मैं तो अफ्रीका का फॉलो कर रहा हूँ,
That also has to make a difference. International standard has to be there, and that minimum standards has to be kept, and that would be fixed by a third party. A third party would be using it, and the National Skill Development Corporation would be a implementing agency. After you got the skill, you will also be given a certification. The certification would be given that the XYZ person have the required skill and can be employed at a particular place. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू हुआ. 24 लाख युवकों को ट्रेन करना है. ट्रेन इस तरीके से करना आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे डेवलप हो सकता है. इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए आपको ट्रेनिंग्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा. अगर आप अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, दैट विल डिपेंड अपॉन द थर्ड पार्टी असेसमेंट दैट वुड बी डन. एंड लास्ट पॉइंट इज आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा. लिखो जी. स्टार्टेड इन 2015. Second point, to impart skill training to youth while focusing on improved curriculum. While focusing on improved curriculum. Improved curriculum and trained instructors. Next point. Covers 24 lakh youths. Cover 24 lakh youth. Next point. National Skill Development Corporation, NSDC. National Skill Development Corporation is the implementing agency. Next. Skill Certification and Monetary Award Scheme. It is a Skill Certification and Monetary Reward Scheme. Next, the training includes soft skills, personal grooming, and behavioral change. आप लोग भी लगा सकते हो. सॉफ्ट स्किल्स, आप पर्सनल ग्रूमिंग एंड बिहेवियरल चेंज. यहाँ पे ज्यादा थोड़ा सा डिप्रेशन शॉर्ट सा रहता है राजेंद्र नगर वाले एरिया में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे बाहर आ जाए. तो सॉफ्ट स्किल तो आप में चलो हो सकते थोड़े बहुत है, लेकिन पर्सनल ग्रूमिंग इज रिक्वायर्ड और बिहेवियरल चेंज इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर यू. नेक्स्ट पॉइंट. Monetary reward is given to trainees. Monetary rewards is given to trainees on assessment and certification. On assessment and certification by third party assessment. Certification by third party assessment bodies. Next, the average monetary reward is around 8,000 per trainee. Next, focus on skill training and aligning it to international standards. Aligning it to international standards for overseas employment in Europe and Gulf countries. Next, प्रधानमंत्री युवा योजना. प्रधानमंत्री युवा योजना वही है. द स्कीम वाज स्टार्टेड इन 2016. 2020-21 तक चलेगी. 5 years is there, and with the 5 years you will be focusing on 7 lakh youth. Basically 7 lakh students would be focusing through various institutes, 3050 institute.
would be there who would be focusing upon these youth so that entrepreneurship education and training can be given. Normally what happens is even after completing your graduation किसी को कुछ नहीं आता होता और ये सबको पता है, ठीक है. On the other hand, what happens in China, South Korea, Japan, these countries, you are provided training from the 5th to 6th standard also. वहाँ की क्यों? अगर आपने 10th के बाद या 8th के बाद अपनी एजुकेशन छोड़ भी रहे हो, you should be in a position for some sort of self-employment या कुछ भी. Just to overcome that gap, institutes में ही आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग इस तरीके से हो सके, so that skills can be developed among you. The government has launched a scheme, प्रधानमंत्री युवा योजना. लिखो जी. It is a flagship scheme on entrepreneurship, education and training. Entrepreneurship, education and training. Next point. It spans over 5 years, 2016 to 21. 2016 से लेके 21 तक. And third point, it provides training to over 7 lakh students. 7 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को through 3050 institutes. Next, Ministry of Shipping. स्टूडेंट्स और सिलेक्ट होने बेसिस पे होते हैं या फिर जिसकी मनमर्जी उससे रिलेटेड. हाँ, जा सकते हैं. क्या है सागरमाला? और कुछ कनेक्टिंग द कोस्ट एरियाज. और कुछ डेवलपिंग पोर्ट एरिया. और कुछ मेजर पोर्ट्स है उनकी कैपेसिटी बढ़ाना, माइनर पोर्ट्स को मेजर पोर्ट्स में कन्वर्ट करना, उसके बाद जो भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना ताकि रेलवे रोड और उससे कनेक्टिविटी कैपेसिटी. चलो ठीक है. सागरमाला बेसिकली it is a scheme that started in 2015 with a focus upon port-led development, and the development has to be either it has to be direct or indirect port-led development. Indirect port-led development का मतलब होगा कि एक तो पोर्ट डायरेक्ट मतलब पोर्ट के रिलेटेड वहीं पे पोर्ट का डेवलपमेंट हो जाए. इनडायरेक्ट का मतलब टू हैव अ बेटर कनेक्टिविटी, efficient transportation from the hinterlands to other parts, so that the nearby areas could also benefit. The program has been started and has 4 basic components. और ये कैसे होगा? Firstly, by port modernization. You have to make your ports modern and at the same time develop new ports also. Secondly, port connectivity has to be increased. नया पोर्ट तो बना दिया लेकिन वहां पे रोड्स ही नहीं है और कुछ नहीं है. That becomes difficult not only to export, वहां से लेके आप अंदर ट्रांसपोर्ट करने का, बट रॉ मटेरियल जो आपने फिनिश प्रोडक्ट्स को वहां पे भेजना प्रॉब्लम हो जाएगी. Not only this, but port linked industrialization. आप उस एरिया में इंडस्ट्रीज भी इस तरीके से डेवलप करोगे so that it becomes easy to reach the port and achieve the target of exports also. And last is not only the industries would be benefited, but the community that is living over there as a whole, the coastal community development should also be focused upon कि उनमें भी कुछ ऐसा skill develop कर दिया जाए so that they could be also benefiting directly or indirectly from the port-led development that is taking place. इस स्कीम को बोलते हैं सागरमाला. लिखो जी.
Start. Yes. Yes. हाँ हाँ नहीं, ऊपर लिखा ना मैंने, देखो. Started in 2015. Second point, to promote port-led direct and indirect development. To promote port-led direct and indirect development and to provide infrastructure to transport goods to and from ports quickly. To transport goods to and from ports quickly. It has 4 components. First, port modernization and new port development. New port development. Second, port connectivity enhancement. Port connectivity enhancement. Next, port linked industrialization. Port linked industrialization. Last, coastal community development. Community development. Next point. The focus would be on efficient evacuation to and from hinterland. Efficient evacuation to and from the hinterland. हाँ जी, hinterland क्या होता है? हैं? उससे थोड़ा सा दूर वाला जो पछड़ा हुआ एरिया जो है उसे. पीछा समुद्र की तरफ नहीं, दूसरी साइड भी होता है, जमीन की तरफ. समझ गए ना? Next is Ministry of Science and Technology. वज्रा फैकल्टी स्कीम, ये क्या होता है जी? Anyone? Vajra faculty scheme. For example, it is a scheme that has been started in a way that the people, the scientist community could come and participate in the development of the country. बाहर से लोग NRIs and other people, they would be coming and they would be helping us to carry out joint research, and basically it is basically focused upon visiting advanced joint research. Your visiting faculty होगी, they would be coming and they would be staying in the country for a minimum of 1 month to 3 months per year. Visiting faculty होगी, NRIs होंगे, they would be participating in the science and development projects in the country. They would be coming to India for a minimum period of 1 month and a maximum period of 3 months to a year. लिखो जी. First one, visiting advanced joint research. Advanced क्यों आएंगे? NRIs है ना. NRI क्या होता है? जो कहते हैं नहीं रहना इंडिया.
visiting joint advanced joint research. Second, and visiting advanced joint research. Next, enabled NRIs and oversee scientific communities. Enables NRIs and oversee scientific community to participate and contribute to research and development in India. Next, the faculty can reside in India for a minimum of 1 month to a maximum of 3 months a year. The faculty can reside in India for a minimum of 1 month and maximum of 3 months a year. Next is मानक. क्या ये मानक स्कीम क्या है? मानक का फुल फॉर्म है मिलियन माइंड ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज. मतलब देयर आर मिलियंस ऑफ माइंड. अगर बिलियन पॉपुलेशन है तो प्रॉब्लम है, तो कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए काम करने का सोच रहे हो. देयर वुड बी मिलियंस ऑफ माइंड्स दैट आर देयर एंड दे आर प्रोवाइडिंग फॉर नेशनल एस्पिरेशंस एंड फॉर द नेशनल नॉलेज. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? आइडियाज आर ऑलवेज देयर बट दीज आइडियाज आर आइदर नॉट फंडेड और दे डू नॉट गेट अ सपोर्ट. क्योंकि बहुत सारे विलेजेस में भी बहुत सारे अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन फॉर द लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और वेरियस अदर थिंग्स वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाते. द गवर्नमेंट वुड बी सिलेक्टिंग एंड चूजिंग दीज आइडियाज. The various engineers and the designers and professionals, they would be working on the final development and the implementation of those ideas. इससे पहले जो स्कीम लॉन्च थी वो थी इंस्पायर स्कीम. Inspire scheme has a part of it that has become a part of it. Is overall the focus would be on starting from children up to 32 years of age. 10 साल से लेके 32 years of age तक होगा. लेकिन there is a component called Inspire Award in it, so that ऐसा नहीं कि 10 साल मतलब when the student is from 6 to 10th standard, 10 to 15 years, to promote scientific temper and scientific development in the children and to give them an award so that they can continuously pursue the scientific career. The government has started इसी का component पहले इंस्पायर था, उसको मानक कर दिया, उसको बड़ा कर दिया है, so that एक बार स्टार्ट तो आपने कर दिया, उसके बाद बच्चा छोड़ ना दे. Even after graduation the things continue and the government tries to give the financial facilities. उसके लिए जो स्कीम है that is called मानक स्कीम. देखो जी, million minds augmenting national aspirations and knowledge. Second point, it is a new name for Inspire Awards. Bracket, it is to motivate children. It is to motivate children of the age group 10 to 15 years. 15. Bracket, class 6 to 10. 10 से 15 साल का जो बच्चा होता है वो छठी से लेके 10वीं क्लास तक में होता है. उसको सेंटर क्या लिखा है? To pursue scientific knowledge and career. Next one. The best ideas would be worked upon
by professional engineers and designers. The best हाँ जी The best ideas would be worked upon by professional engineers and designers and would also get an incubation support. Also get an incubation support. Revise करो जी इस पे जल्दी. कोई भी साइंस फैकल्टी साइंस स्टूडेंट होता है कोई भी सब्जेक्ट होता है ओके मास्टर डिग्री में अगर कोई भी टॉप करता है उसको भी सर पीजी के लिए इंस्टेंट मैंने बोला कि पहला कंपोनेंट जो समझा पहला कंपोनेंट इसका इंस्पायर बच्चों से शुरू कर रहे हैं. एज ग्रुप ऑफ 10 to 32 32 लिखा कि नहीं लिखा 10 से लेकर 32 तक है. तो वही जो आप बात बोल रहे हो क्योंकि शुरू हमें बच्चों से करना पड़ेगा टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इन देम एंड दैट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर पीजी. Next is some important national parks that were in news recently. एक टेबल बना लो that would be easier. पहला छोटा सा रखना दूसरा बड़ा कर लेना. दाचिगम कहाँ पे है किसके लिए फेमस है और कुछ ये ठीक है. लिखो जी जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट फेमस फॉर रेयर कश्मीरी स्टैग. ब्लैक बियर्ड्स and musk deer. Next, Corbett. कहाँ पे है उत्तराखंड फेमस फॉर टाइगर्स. फेमस फॉर टाइगर्स. नेक्स्ट इज सुंदरबंस. कहाँ पे है अरे क्या बात है. फेमस फॉर देखो जी देखना कहीं नजर ना लग जाए तेरे को. फेमस फॉर फर्स्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑफ द गंगेटिक. Second, tigers, Royal Bengal tigers. Third, fishing cat. And fourth, wild varieties of birds. Next, Manas. कहां पे है देखो जी असम. सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट
This area bordering Bhutan, the area bordering Bhutan is formed by three rivers. The area bordering Bhutan is formed by three rivers, that is Manas, Hakua एंड बेकी. ये आया था न्यूज़पेपर में, इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं ये रिवर. इनमें से कौन सी रिवर यहाँ पे बॉर्डर करती है? वही तो मैंने पहला पॉइंट ही वो लिखवाया है. हाँ, फाउंड बाय दीज रिवर्स. द वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, नेक्स्ट पॉइंट, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स tigers, elephants, sambar, swamp deer, हाँ, swamp deer, SWAMP, swamp deer and langur. Next, Kaziranga, कहाँ पे? फेमस फॉर और कुछ लिखो जी. असम फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, द वेरी इंपॉर्टेंट, द पार्क इज फुल ऑफ टॉल ग्रासेस. The park is full of tall grasses and swampy area. ये आ चुका है. Egrets are also found here. EGRETS. Egrets are also found here. Next, Koldiogana. हाँ, Koldiogana बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? भरतपुर. फेमस फॉर हाँ, वेरी गुड, ठीक है. माइग्रेटरी बर्ड्स आर कमिंग. फर्स्ट, भरतपुर in Rajasthan. Next point, large number of migratory birds from China and Siberia. Large number of migratory birds from China and Siberia, which includes heron, storks, cranes, geese, etc. are found here. Next, Sasan, the Gir National Park. कहाँ पे है? फेमस फॉर गुजरात, फेमस फॉर एशियाटिक लायंस. नेक्स्ट, कान्हा, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश. फर्स्ट पॉइंट, it was originally conceived to protect swamp deers, Barasinga, but now also includes tigers, black buck and leopards.
and leopards. यहाँ पे नेक्स्ट पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? केरला. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज बिल्ट अराउंड एन आर्टिफिशियल लेक. केरला. सेकेंड पॉइंट, इट इज बिल्ट अराउंड एन आर्टिफिशियल लेक. नेक्स्ट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ऑल्सो नोन एज, तो एक ही बात होगी, कोडाई कराई. तमिलनाडु बेसिकली. अच्छा, नेक्स्ट फेमस फॉर migratory birds like flamingos, blackbird, spotted deer and wild pigs. Next, Mudan Thorai. Next, tiger sanctuary in Tamil Nadu. Famous for. Achha, first point. It borders with Tamil Nadu and Kerala. First point. Second point. Famous for lion-tailed macaque. Lion-tailed macaque. MACAQUE. तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे. नेक्स्ट, अन्नामलाई. MACAQUE. नेक्स्ट, अन्नामलाई. ये भी तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर है. इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं. एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द प्रम्बिकुलम डैम इज लोकेटेड विद इन दिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट, तमिलनाडु एंड केरला. सेकेंड पॉइंट, ऑल्सो नोन एज इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. थर्ड, प्रम्बिकुलम. PARAMBIKULAM. Dam is located within this wildlife sanctuary. Is located within this wildlife sanctuary. Next, international organizations. अच्छा, इससे पहले एक सिंपल सा है. यूनाइटेड नेशन में हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस? 4, 5, 6. कितनी है? 4, 5, 6. 6 है, 4 है. लिखो जी, चलो फिर. ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन. कभी कभी क्या होता है, इट इज कवर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी. जो भी आप पॉलिटी की किताब पढ़ते हो, पॉलिटी मतलब एनसीईआरटी पढ़ते हो, जब ग्रंथ पढ़ते हो तो उनमें नहीं मिलते, बेसिक्स पढ़ते हो तो यू विल फाइंड दीज थिंग्स आर देयर, बट दीज थिंग्स यू टेंड टू इग्नोर. और कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पे फंसते कम है. जब दिल्ली में रहने वाले बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं और गांव में रहने वाले ये क्वेश्चन बच्चे सही करते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि दे आर रीडिंग दोज एनसीईआरटीज वेरी थॉरली और आपको एनसीईआरटी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. देखो जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, चाइनीज. हाँ जी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश,
एंड अरेबिक। अरेबिक को अंडरलाइन करके ब्रैकेट में करो, इट वाज एडेड इन 1973। नाउ मेक अ टेबल। 3 कर लो। पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम, सेकंड ईयर और सेकंड हेडक्वार्टर एंड थर्ड ईयर। हाँ बोल तो सकते हो, लेकिन जब ट्रांसलेट करके दूसरे लोगों को समझाना होगा तो ये 6 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके अब कह सकते हो कि मेरे को ये लैंग्वेज समझ आती है। बहुत दूसरा, अब हिंदी तो हमें पता है क्योंकि हमें हिंदी समझ आती है, दूसरे भी तो अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनके लिए ट्रांसलेटर होता है। अंग्रेजी होगी, उनको समझ आती होगी, स्पेनिश भी हो बेसिकली। नेक्स्ट इज आई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वियना 1957, हेडक्वार्टर वियना, ईयर 1957। नेक्स्ट यूनेस्को, पेरिस 1946। हेडक्वार्टर और ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ईयर आप भूल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इसको मैच द फॉलोइंग करो, विच हैव बीन करेक्टली मैच्ड और मैच द फॉलोइंग। थर्ड, यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, यूनिडो, UNIDO, वियना 1985। नेक्स्ट FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम 1945। नेक्स्ट WHO जिनेवा 1946। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, कनाडा मॉन्ट्रियल 1944, मॉन्ट्रियल कनाडा में। नेक्स्ट 1944। नेक्स्ट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, जेनेवा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जेनेवा 1932। ILO, जेनेवा 1919। WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जेनेवा 1974। You know, normally you would find these organizations in newspapers also. WMO, World Meteorological Organization, Geneva. Next, International Maritime Organization, IMO. ये की जरूरत नहीं है सर, अरे नहीं जरूरत है, जितना जरूरत है मैं करवा रहा हूँ। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, लंदन। नेक्स्ट IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रोम 1977। नेक्स्ट अफ्रीकन यूनियन, एडिस अबाबा, एडिस अडाबा, ADDIS ADABA। इथोपिया, इथोपिया में है 2002। इसमें एक पॉइंट लिखो, ऑल अफ्रीकन स्टेट्स except Morocco are in the union, are in the African Union. All African states except Morocco
or in African Union. Next, Arab League.